Hi students, in last class we have seen that there is a family of grammars, and by using that family of grammars, family of languages are generated, and these family of languages are accepted by the families of automata. Okay, so in that we have seen there are many grammars, and for that grammars generates the many languages, and that languages are accepted by some machines. Okay, so before proceed to the finite automata, which is the machine for accepting the regular languages. What is the regular languages that we are going to study along with the designing the finite automata? Okay, so before studying about the finite automata or any machine, we require these terminologies, which will be helpful for us to design or generate a grammar or language. Okay, so let's see first terminology is what is a symbol. So in TOC, a symbol is a basic building block. ओके मतलब बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक मतलब क्या है कि एक बेसिक है जो टीओसी में जरूरी होता है व्हाइल डिजाइनिंग द लैंग्वेज और स्ट्रिंग ओके तो हम किसे कहते हैं कि सिंबल जैसे कि स्मॉल लेटर्स है ए बी सी अप टू जेड these are considered as the symbols along with that capital letters are also belongs to the category of symbols. Then numbers like 0 to 9 numbers are also belongs to the category of symbols. Then again we can also include the signs like plus, minus, division or any other thing like suppose this is the man and this is the woman, that is also a symbol we can consider. But while designing a language, we will use the valid symbols. So valid symbols are like this. These are the valid symbols, these are the valid symbols, 0 to 9, plus minus division. These are the considered as valid symbols. Okay, so this is about the symbols. Then what is the alphabet? Alphabet is a collection of symbols. मतलब क्या है एक और एक से ज्यादा अगर हम सिंबल्स इकट्ठे करेंगे that is called as a symbols, sorry, that is called as a alphabet, means collection of symbols, and the alphabet is represented by the summation symbol. Okay, suppose here the summation equal to a comma b is there, so I can say that alphabets having a comma b. Here there are three alphabets present, that are the A, B, C. Similarly, 0, 1 is also considered as alphabet, and finally 0 to 9 also considered as a alphabet. Okay, so these alphabets we can say that these are always finite. ओके, सो ये इन्फिनाइट नहीं होनी चाहिए, ये हमेशा क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए. वो क्यों, हम आगे देखेंगे. अगर अल्फाबेट इन्फिनाइट हो गई तो उसके ऊपर जो लैंग्वेज जनरेट होगी और स्ट्रिंग जनरेट होगी वो भी क्या होगी, इन्फिनाइट होगी. इसीलिए हमें ये क्या चाहिए, फाइनाइट चाहिए, ताकि हम स्ट्रिंग्स और लैंग्वेज जनरेट कर पाए ओवर द अल्फाबेट जो भी गिवन रहेंगे. Okay, the next terminology is that string. So string is a sequence of symbols. Okay, we know that symbols, so we can call it as a string is a sequence of symbols. Then if alphabet is a comma b, then small a is a string over the alphabet a comma b which is of length 1. We can say that. मतलब अगर alphabet a comma b given है, then we can consider small a as a string over the particular alphabet a comma b of length 1. अगर इसके जगह पे अगर a b होता तो हम क्या बोलते कि a b is a string over the alphabet a comma b of length 2. तो अगर हमें गिवन है अल्फाबेट ए कॉमा बी एंड दे हैव आस्क्ड अस लाइक हाउ मेनी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 आर पॉसिबल ओवर द अल्फाबेट ए कॉमा बी, तो हमें क्या चाहिए, लेंथ 2 वाली स्ट्रिंग्स चाहिए ओवर द अल्फाबेट ए कॉमा बी ऑफ लेंथ 2 चाहिए बस.
मतलब ए और बी को मिला के टू लेंथ वाली कौन सी स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है? फर्स्ट स्ट्रिंग इज ए, देन ए बी, बी ए और बी बी। मीन्स नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कितने पॉसिबल है? दैट इज 4। ओके, ऑफ लेंथ 2 ओनली। ओके, इसमें हम सी इंक्लूड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें अल्फाबेट गिवन है ए कॉमा बी, तो हमें ओवर द अल्फाबेट ए कॉमा बी ही स्ट्रिंग्स जनरेट करने पड़ेंगे। ओके, सो सिमिलरली अगर हमें ये पूछा जाए कि लेंथ एन स्ट्रिंग्स कितने पॉसिबल हो सकते हैं ओवर द अल्फाबेट ए कॉमा बी, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सपोज मान लो यहाँ पे जो फर्स्ट अल्फाबेट आएगा या स्ट्रिंग में फर्स्ट जो अल्फाबेट आएगा वो किन में से होगा? फ्रॉम ए और बी। मीन्स हियर वी हैव टू ऑप्शंस for the first place. Similarly, for second place also we are having two options, that is either A or B. Similarly, for third place also we have two options, that is either A or B. और like हम कितने लेंथ की बनानी है हमें? n लेंथ की। तो जो n लेंथ होगा उसके लिए भी कितने ऑप्शंस हो गए? टू ऑप्शंस हो गए। सपोज 1 2 3 अप टू n। सो अगर इसका हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सो दैट इज बिकम्स हाउ मेनी स्ट्रिंग्स आर पॉसिबल ऑफ लेंथ 2? दैट इज बिकम 2 रेज टू पावर n। लाइक हियर यहाँ पे हमें क्या था कि लेंथ 2 पॉसिबल और अल्फाबेट भी कितने थे? 2। तो दिस इज बिकम 2 पावर 2, दैट इज बिकम्स 4। वी हैव कैलकुलेटेड like this only, this is 2 power n. So length n strings possible over the alphabet a comma b is 2 power n. So length is represented by this symbol. Okay, we can say that bar of mod of sigma, that is called as the length of the symbol. Okay, it will calculate the length. So in this example we will represent length or number of strings equal to 4. Okay, so this is called as a number of strings or length of the strings. Okay, then the number of strings of length n possible over the alphabet. Okay, possible over the alphabet, जो भी अल्फाबेट होगा तो कितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स पॉसिबल होंगे? दैट इज द लेंथ ऑफ द अल्फाबेट। यहाँ पे लेंथ ऑफ द अल्फाबेट कितनी थी? 2। so that is become 2 power n. so here whatever will be the alphabet, suppose ये 3 रहेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 आएगा। यहाँ पे अगर n रहेगा तो यहाँ पे क्या आएगा? n। so that is become, and length कितनी है उसकी? n। so this is become total number of strings possible over the alphabet which is of length n. so this much length n strings will be possible over the alphabet. अल्फाबेट में कितने भी सिंबल हो सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रिंग्स। नाउ वी विल सी व्हाट इज ए लैंग्वेज। ओके, सो बेसिकली अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज कंसीडर करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज क्या है? इट इज ए कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। ओके, जो वर्ड्स मिला के हम क्या बोलते हैं कि एक इंग्लिश लैंग्वेज तैयार होती है। और जो वर्ड्स है वो क्या मिला के तैयार होता है? सम अल्फाबेट्स अगर हम इकट्ठा करेंगे और सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स हम बोलेंगे, that is become a word. Okay, so similarly in TOC we can say that language is a collection of strings and string is a collection of symbols. Okay, so language is nothing but a collection of strings. Okay, so consider that we have given that alphabets that are a comma b, and L1 language is there which says that set of all the strings of length 2. We have to calculate all the strings of length 2 over this alphabet. Alphabets are given. So अगर दो 2 लेंथ की strings निकालेंगे तो that are become 4, that is either AA, AB, BA or BB. So this is become 4, or I can say that these strings are in finite number. Okay, so language L, we can say that language L is a finite. Okay, we are designing the languages over the alphabet a comma b only. Okay,
Next language is that set of all the strings of length 3, okay, over the alphabet a comma b, so that are becomes triple a, double a b, a b a, a b b, b a a, b a b, b b a, and triple b. These are the possible strings formed over the alphabet a comma b of length exactly 3, so that are become 8. And these strings also in finite number, so we can say that the language is finite. So finally, there is a language L3 which says that generate set of all the strings where each string starts with A. मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐसे स्ट्रिंग्स फाइंड आउट करनी है जो कि ए से स्टार्ट हो जाए और ओवर द अल्फाबेट ए कॉमा बी. यहाँ पे हमें लेंथ बताइए कि उसने कि कितनी लेंथ होनी चाहिए. नो, दे हैव नॉट मेंशन्ड लेंथ. सो मिनिमम लेंथ क्या हो सकती है, ए. देन ए बी बिकम्स ए स्ट्रिंग्स ट्रिपल ए, ट्रिपल डबल ए बी, और सपोज ए बी ए, अगेन ए बी बी, again A B A B, then A. So this will never stop because there are many strings are possible which will start from small letter A. Okay, so these strings are in infinite number. These strings are in infinite number, so we can say that the language is infinite. Okay, so point is that if alphabets are finite, then the languages generated by that alphabets may be finite or infinite. मतलब अल्फाबेट हमेशा फाइनाइट रहेंगे, बट उसका यूज करके जो अल्फाबेट्स है हमारे, वो यूज करके जो नंबर ऑफ लैंग्वेजेस हम डिजाइन करेंगे वो फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं. Okay, so this is about the language. Okay, and in next lecture we will see about the power of alphabet, and then we will study how we can go through the finite automata and why we need a finite automata. If finite automata is not there, then what will be the issue and how finite automata will overcome that issue. ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से एक बार देख लेना. डेफिनेटली अगर ये आपको समझ में आ जाएगा देन टीओसी इज वेरी इजी. अदरवाइज if you will not get the basic part, then TVC will be difficult, and this I already told that this is a very important subject in GATE. Okay, so till then, thank you so much.